So next topic, that is Newlands octaves. We know that Doberan's triads were failure because it cannot classify all elements in the form of triad. So next scientist he was the Newland. So we know that after the failure of Doberan's triads, Newland started to classify the elements on the basis of atomic mass. We know that Mendeleev, Newlands and Doberan, all three scientists classify the element on the basis of atomic mass. So what is triad? What is octave? जैसे हमने ट्राइड देखा था, एज पर सेम हम लोग देखें यहाँ पे ऑक्टेव्स लॉ. ना ऑक्टेव्स का मतलब क्या रहेगा? इफ द एलिमेंट्स वेर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मतलब हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. देन तो वहाँ पे मेन सेंटेंस अभी आएगा, देन द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट एलिमेंट आर सिमिलर टू द फर्स्ट. सी द स्टेटमेंट अगेन. When elements were arranged in increasing order of their atomic masses, then the properties of every eighth element are similar to the first. In this statement, every eighth element and similar to the first, those words are very important. Now let's go see the explanation with this example. Okay, तो इसका example हम लोग क्या लेंगे? Suppose we are arranging the elements in the increasing order. तो first element हम लोग कौन सा लेंगे? Hydrogen. The next one is helium, but helium is an inert gas. It was not discovered at that time. So next one is lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, and after that fluorine is the eighth element. But he found that the properties of fluorine are similar to the hydrogen. So उसने fluorine को कहाँ पे रखा? हाइड्रोजन के नीचे. उसके बाद नेक्स्ट वन आएगा, दैट इज नियॉन, बट नियॉन इज अ इनर्ट गैस, तो हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे. नेक्स्ट एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, देन क्लोरीन. अगेन द प्रॉपर्टीज आर क्लोरीन आर सिमिलर टू द फ्लोरीन, तो उसको कहाँ पे रखा? फ्लोरीन के नीचे. एंड सेम पोटेशियम एंड calcium, say potassium and calcium. But listen, at the time of Newland there are 56 elements were known, लेकिन उसने classification कहाँ तक किया है? Only up to calcium. It means that in above example or in above table we can say that the properties of sodium are similar to the lithium and the properties of calcium are similar to the magnesium, and this is about octaves law with its explanation. But again there are some limitations. Which limitations are there? The question is very important in your exam, that limitation of Newlands octaves. There are total 4 limitations. There are total 4 limitations, but see this limitation in the short form. The first one is up to calcium, second 2 elements, third one is 2 element, and last one is no space for new element. Listen student, यहाँ पे मैंने आपको एक keywords दिया. Actually these are the keywords. Up to calcium, 2 elements, no space for new element. तो आप लोग एक सेंटेंस में कैसे बोलेंगे? Up to calcium, 2 new elements. Up to calcium, 2 new element. Let us see the explanation of that. The first one is up to calcium. Out of 56 elements, he could classify elements only up to calcium. It means वहाँ पे 56 एलिमेंट थे, उसमें सिर्फ कैल्शियम तक की क्लासिफिकेशन कर सका. सेकेंड वन, to accommodate all known elements, he placed 2 elements at the same place. Means what? तो 56 एलिमेंट थे, सबको वहाँ पे accommodate करने था, तो उसने क्या किया? 2 एलिमेंट्स को एक ही प्लेस पे रखा. फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट एंड निकेल. थर्ड वन इज सेम 2 एलिमेंट्स. उसने क्या किया? ही प्लेस 2 एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज अंडर द सेम नोट. मीन्स व्हाट? Cobalt and nickel having different properties, but he placed those under the same note. ये भी एक limitation हो जाएगा. And the last one, that is there is a no provision for newly discovered elements. It means जो नए elements का discover हुआ था उनके लिए वहाँ पे कोई भी space नहीं था. So according to all these 4 limitations, तो हम लोग क्या बोल सकते रहे? ये वाला जो classification था, it was again unsuccessful. So the last statement is that because of all these limitations, Newlands octaves are also failed to classify the elements. So in this way we are discuss all about the Newlands octaves. Thank you.